we started this national youth peace campaign and we came up with the idea back in 2010 कि हम पूरे पाकिस्तान से नौजवानों को इकट्ठा करते हैं एंड हम सीखना चाहते हैं कि नौजवानों को किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए, उसके लिए उन्हें क्या इक़दाम करने की जरूरत है। तो 2010 में हमने पहला नेशनल यूथ पीस फेस्टिवल जब ऑर्गेनाइज किया, हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये एक नेशनल एनुअल फ्लैगशिप इवेंट बन जाएगा। रादर एट दैट टाइम हमारा फोकस ये था कि नौजवानों से बातचीत करके उनकी एस्पिरेशन और उनकी मर्जी के मुताबिक आने वाले साल का एजेंडा तय कर सकें। So from 2010 onwards, it's this 13th annual edition of the National Youth Peace Festival. 13 साल से हम जो कोशिश कर रहे हैं, people ask me that what have you achieved in 13 सालों के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि 13 सालों के अंदर what we have done is कि तकरीबन 9,000 से ज़ायद around 9,000 young people have been part of this National Youth Peace Festival. They have shared their challenges, their aspirations for the future, and also come up with very innovative solutions. वो इनोवेटिव सॉल्यूशन जो हैं दैट हैज हेल्प चाइना डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड अदर डेवलपमेंट पार्टनर्स, जिसकी बेस के ऊपर हमने बहुत सारे डेवलपमेंट एजेंडा जो है अपना तय किया और अपने आने वाले इनिशिएटिव्स को तय करते हैं। आप सबके इल्म में होगा कि कल जो है वो इंटरनेशनल पीस डे है। तो इस अमन के आलमी दिन के हवाले से हमारा जो हमेशा फोकस रहता है वो ये है कि नौजवानों को इसमें क्या किरदार हो सकता है। दैट्स व्हाई इस साल जो हमने अपना थीम रखा है वो यूथ एस्पिरेशंस फॉर सोशल, यूथ एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेटिक, पीसफुल एंड कोहेसिव पाकिस्तान। तीन चीजें हैं। आई नो कि हमारे गेस्ट यहाँ बैठे हैं, आई वोंट टेक मच टाइम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट वी स्ट्राइव फॉर कि नौजवान जो हैं वो माशरे को पुरअमन बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे माशरे के कुछ लोग जो हैं या कुछ अफराद आमतौर पर नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर से देखा जाता है, वो ये कि ये माशरे में अजाब फैलाने वाले हैं या लड़ाई करने वाले हैं या तशद्दुद करने वाले हैं। लेकिन हमारा मानना यह है कि नौजवान जो है वो पीस के अंदर, अमन के अंदर इक्वल पार्टनर और स्टेक होल्डर है, और शायद नौजवानों से बेहतर कोई भी इस अमन के अमन का ख्वाह नहीं, और कोई भी जो है बेहतर अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे आप सब कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में तमाम सूबों की जो हमारी पार्लियामेंट थी, नेशनल असेंबली थी, वो डिसॉल्व है, इंटरिम गवर्नमेंट है, और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि जल्दी इंतखाबात होने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% ज्यादा की पॉपुलेशन ऐसी है जो रजिस्टर्ड वोटर की, जो कि नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो नौजवान अगर वोट के दिन, इलेक्शन के दिन बाहर निकले और अपना जमहूरियत के अंदर हिस्सा डालें तो शायद वो अपनी इस परेशानी को बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं। आखिरी चीज ये है कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ तबकात फिक्र के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग हैं। हमें सबको इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें यकीनी तौर पे इस फख्र के साथ हमारे साथ बात रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने पंजाबी होने पे, पश्तून होने पे, सिंधी, सराइकी, बलोची, हज़ारा, इस सब पे होने पे उतना ही फख्र होना चाहिए और किसी को इस बात पर एतराज नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमें अपने मुस्लिम होने पे, अपने क्रिश्चियन होने पे, अपने अहमदी होने पे, सिख होने पे, हिंदू होने पे उतना ही फख्र होना चाहिए जितना आप करना चाहते हैं, क्योंकि मजहब का ताल्लुक आपके अपनी जात से आता है। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम सब जो है बराबर हैं, और ये जो हॉल में जो लोग बैठे हैं ये गुलदस्ते की मानते हैं जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। और honorable guests, I just want to say that we have around 300 young delegates from across Pakistan. These are the representatives of their institutions. They are also representatives of civil society organizations, youth-led political organizations. But most importantly, they are also representatives of domestic workers. They are representative of transgender people. They are representative of labor and artisans. So we don't have just the students coming here. ये पूरे के पूरे पाकिस्तान में जो भी लोगों की नुमाइंदगी है, they have tried our best that we ensure the diversity in the hall in terms of experience and also socio-economic background. इस कॉन्टेक्स्ट के साथ वैसे भी कहना चाहता हूँ, इस 2 दिनों के अंदर हम for our honorable guests will deliberate about 2 important components, 2 important issues के ऊपर हम specific discussions करेंगे. One is around gender inclusion and empowerment. This is the most important component for us because we want to make sure that we live in a society जहाँ पे नौजवान, चाहे बहुत खवातीन ट्रांसजेंडर पर्सन हैं, वो सब के सब जो है आपस में बराबरी के साथ रह सकें, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड हो, जेंडर ना हो. Secondly, tomorrow we have an interfaith dialogue because in the context of what we've seen in Pakistan, जड़ावाला का इंसिडेंट हमारे सामने है. We wanted to see कि पाकिस्तान के नौजवानों का अमन के लिए क्या किरदार सकते हैं और खास तौर पे मजहब इसमें कितना अहम रोल प्ले कर सकता है. So we will be having an interfaith dialogue with religious scholars and they will get an opportunity to interact with young people directly. At the end of these 2 days, we really want कि हम कुछ concrete recommendations तय कर सकें. We will share those recommendations with our honorable guests sitting on the panel and also other honorable guests that will join us soon. हमारा मकसद ये होगा कि आने वाले साल के अंदर अपना एजेंडा जो है वो तय कर सकें. तो ये हमारा प्रीटेक्स्ट है, ये हमारी चीजें. और मुझे पता है कि हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, रहमान साहब, मैं इनको सबको बता रहा था अभी कि व्हेन ही वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट
for education in 2016. So we're very fortunate that the 7th edition of the National Youth Peace Festival was inaugurated by him in Islamabad, National Library के अंदर inaugurate किया था. And we always see him. जब भी हम नौजवानों की बात करते हैं, he's always very kind, very passionate about talking to young people. So with आपकी तालियों की धुन में मैं request करना चाहूँगा our honorable guest, the Governor of the Punjab, Honorable Wahjoc Rahman Sahab, to come and please address the audience. बहुत सारी तालियां चाहिए सर हमें. नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Her Excellency Ms. Christian Hawkins, U.S. Consul General Lahore, Mr. Muhammad Shahzad Khan, Executive Director, Chanan Development Association, office bearers and representative of the organization, and above all, dear young participants from all across the country, Assalamu alaikum and a very good morning. I'm pleased to be here on this important mood, this important meetup of young brains who are here to deliberate and think and find ways and means for moving ahead, and in order to benefit the society with your efforts and wisdom. It is incredible. And I must appreciate the Chan Development Organization for arranging this wonderful meetup. Whenever I look at the aims and objectives of the organization, I'm pleased to see that this CDA pledges and resolves to work in the field of women empowerment, youth development, democracy, peace, and sustainable development. All of these issues are of extreme importance when you talk about the future. Alhamdulillah, Pakistan has a great demographic dividend of young people, which are high in percentage as compared to many other nations of the world. And when we look at it, this is an asset, this is a potential which can make huge difference, not only for Pakistan, but for the humanity. And we must always strive for betterment. And we must always strive for improving things for humanity. Whatever we learn, not only the education and the right skills, but also we must develop good character and good character traits and attitude, so that no matter wherever we go in the world, we work in a positive way and work for the betterment. And it's also comforting to see today's or this festival's theme, which revolves around youth aspirations for democratic, peaceful, and cohesive Pakistan. Without peace, there can be no development. And then it talks about cohesion. In a pluralistic society, we learn to live with differences. We learn to live and with attitudes which are tolerant. So we have to exhibit tolerance. And at the same time, we have to go beyond tolerance and try to understand others' point of view. As Shahzad was just saying, that no matter what is the religion or sect or political party of any person is, but we must have respect for others' point of view. Whenever we argue with each other, we can have dissenting point of views. We must use rationale, we must use logic, we must use merits of different things, but at the same time, we have to respect others' point of view. When it comes to religion,
We can tell someone what we believe, but we cannot tell someone that you are wrong. Everyone has his or her own merits of deciding things and the conditions. So we have to abide by that. आज मुआशरे में नौजवान जो हमारा सबसे कीमती असासा है, उनको मायूसी में धकेल दिया और उनको ये बताया गया है कि शायद सब खराब है और सारा का सारा सिस्टम खराब है और हर चीज गलत है। अगर ऐसा होता तो आप अपने आप से शुरू कीजिए, अपने वालिदैन पे नजर डालिए, अपने इर्द गिर्द लोगों पे नजर डालिए, तो आपको उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटीज मिलेंगी। बहुत से मुल्कों में फैमिली सिस्टम सही एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे बच्चे बहुत बेतहाशा परेशान रहते हैं कि वालिदैन को उनकी परवाह नहीं है। हम अगर अपने वालिदैन को देखें तो उन्होंने हमारे आज के लिए अपना मुस्तकबिल या हमारे मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान किया होगा। अगर हम मुआशरे पे नजर दौड़ाएं तो हमें बेतहाशा ऐसे लोग मिलते हैं। पाकिस्तान रैंक्स high in Committee of Nations, where in contrast or looking at the per capita GDP of the country, हमारी जो philanthropy में contributions जाती हैं, they are ranked much higher. एक निस्बतन मौशी कमजोर मुल्क होने के बावजूद relatively कई ममालिक से उनकी निस्बत per capita philanthropy ज्यादा रहती है। अखुवत जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो लोग अरबों रुपए उसे देते हैं, वो माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से लोगों की मदद करते हैं। और आपको पता है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न किस मुआशरे में है? पाकिस्तान में। क्योंकि अखुवत जब इंटरेस्ट फ्री लोन्स देती है तो 99.9% पीपल पे इट बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन। और वो कौन से लोग होते हैं? वो खांचा फरोश होते हैं, रेडी वाले होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, जिनको छोटे कर्जे उनकी बहुत सारी माली मुश्किलात को हल करने के लिए दिए जाते हैं। तो वो कोई चंद दिनों में अरबपति नहीं हो जाते, उसके बावजूद वो पे बैक करते हैं और अपना एहसास जिम्मेदारी लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि मुआशरा सारा का सारा चोर है, तो ये कौन से मुआशरे के रहने वाले लोग हैं जो 99.9% चीजें वापस कर रहे हैं और उनकी कोई भी कोलेट्रल और सिक्योरिटी और उनकी जायदाद रहन नहीं रहती? अगर ईदी साहब जैसी शख्सियत एम्बुलेंस बनाने निकलती है सर्विस, तो पहली उनकी अगर आप कहानी पढ़े तो पहली एक उन्होंने एम्बुलेंस खरीदी थी, उसमें खुद ही वो उसे चला के लोगों की मदद किया करते थे। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस नेटवर्क है। तो ईदी साहब को किसने पैसा दिया? पाकिस्तान की आवाम ने दिया और खर्च हुआ पाकिस्तान की आवाम में। बेतहाशा ऐसी मसाल। अभी फ्लड्स आए तो फ्लड्स में गवर्नर हाउस के जरिए लाहौर के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने इतनी डोनेशन दी कि अरबों रुपए की ट्रक्स चीजें पैक खुद करा के अपनी इंडस्ट्री को पार्शली शट डाउन करके उनकी जो असेंबली लाइंस थी वहां पे चीजें लोगों के लिए जो मुस्तहक थे पैक की। मैं खुद भी किया उनके साथ, और साउथ पंजाब में, सहमन शरीफ में, सिंध में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब की आवाम की तरफ से उनको इमदाद पहुंचाई। तुर्की में जब जल्जला आया तो ट्रक आपने एयरप्लेन्स का प्राइम मिनिस्टर वहां खुद भी गए, हुकूमत की तरफ से भी इमदाद की, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी कहा तो, और PIA की उन्होंने सर्विस फराहम की कि जो भी इमदाद देगा मुफ्त पहुंचाई जाएगी। फुल प्लेन लोड्स जो हैं वो यहाँ से प्राइवेट सेक्टर ने लाहौर से, कराची से, मुख्तलिफ जगहों से तुर्की के जरूरतमंदों के लिए भेजे। तो अगर मुआशरे में नेगेटिविटी है तो ये कौन लोग हैं जो कहाँ से आके करते? हम कहाँ थे, कहाँ आए, कैसे हुआ, क्या खराबियां हैं? खराबियों पे हम अगर नजर नहीं रखेंगे, अनलेस किसी का कॉल है कि इफ यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, you're already halfway to the solution of the problem.
towards the solution of the problem. तो जब तक हम अपनी खराबियों पे नजर नहीं रखेंगे हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन जो मायूसियां सिस्टमेटिकली फैला दी गई हैं कुछ लोगों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए या कुछ और औरों ने अपनी गलत हुकूमतें कायम रखने के लिए या कुछ और जरिए से हमें उनसे बाहर निकलना होगा। हमारे नौजवानों को लोगों के दूसरों के अल्टीरियर मोटिव्स का टूल नहीं बनना होगा। हमारे नौजवानों को अपने अंदर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज पैदा करनी होगी कि जो भी उनको बात की जा रही है, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे कोई और कर रहा है, उसका तज्जियाती जायजा, उसकी एनालिटिकल की तस्वीर के दोनों रुख देखने की उनको पता होना चाहिए। अगर कोई उनको ये कहे कि आपका कोई कान काट के ले गया, दीवाना वार उनसे भागने की बजाय उनको पहले अपना काम देखना फैक्ट्स। अगर कोई उनको ये कहे कि पूरे मुल्क में चोरी हो गई है और डाका लग गया है और पूरे मुल्क में करप्शन हो गई है, तो उनको देखना है कि किस दौर में करप्शन हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अमेरिका का भी, स्वीडन का भी, चाइना का भी, स्विट्जरलैंड का भी हर साल रेटिंग करता है। बड़े रोबस्ट उनके मैकेनिज्म है कि करप्शन परसेप्शन के बारे में बताते हैं। देखना है कि किस वक्त हम कहाँ थे, कब कहाँ थे। गालबन 2013 में हम ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में पूरी दुनिया में 117वें नंबर पे थे। 116 ममालिक हमसे ट्रांसपेरेंसी में बेहतर थे। 2018 में हम 112 नंबर पे आ गए, तो 5 रैंकिंग हमारी बेहतर की और 111 ममालिक भी हमसे बेहतर थे। 2022 में गालबन हम 142 नंबर पे आ गए और 141 ममालिक हमसे बेहतर हो गए। अगर हम कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो हम उसके ऊपर बात करें कि मुल्क के अंदर मईशत में इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के आगे जाने के लिए। When we're talking about sustainable development, it is the economy which matters a lot. Unless you have fiscal space, you can't spend. You have a larger fiscal pie. You can spend more on social development, on education, on health. So you have to look at it. Price Waterhouse ऊपर एक बहुत मारूफ इदारा है दुनिया का, वो रैंकिंग्स बनाता है कि मुल्कों की मईशत कहाँ जा रही है। 2018 में हम 24वीं बड़ी मईशत बन चुके थे। 2022 में हम 47वीं मईशत पे आ गए थे। तो 23 ममालिक हमसे आगे निकल गए। हम वो प्राइस वाटर हाउस की प्रेडिक्शन थी कि अगर ये पॉलिसी चलती रहे तो हम G20 कंट्रीज 20 बड़ी मईशतों में 2025 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन वो रिवर्सल हुआ और कोविड और बाकी मुल्कों में भी आया, लेकिन पाकिस्तान में उन ममालिक में भी कोविड आया जो 23 ममालिक हमसे आगे निकल गए। फिर कुछ मौशी पॉलिसियां थी। 2018 के बाद पाकिस्तान का डेट बर्डन अगले 3.5 साल में 79% बढ़ा। तो हमें जो भी चीज देखनी है और उसके इन सब पॉलिसीज के बावजूद किसी के लिए डेवलपमेंट है, किसी के लिए एजुकेशन है, किसी के लिए हेल्थ है। अगर हम क्योंकि आपकी जो मकासद हैं, नोबल ऑब्जेक्टिव विच सनन डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशन हैज लेड डाउन, दैट इंक्लूड्स डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इज द वे टू गो, परहैप्स इट इज द ओनली वे। और अभी डेमोक्रेसी के लिए सबको पार्टिसिपेट करना, इट्स अ नोबल रिस्पांसिबिलिटी ऑन एवरी सिटीजन टू डिसाइड कि किस पार्टी को और किसको हमने डेलीगेट करनी है ये नोबल रिस्पांसिबिलिटी कि आप आए और मुल्क की खिदमत करें। हर पार्टी जो है वो आपको अपने किस्से सुनाएगी, अपने वाक़े बताएगी, अपनी तारीफ करेगी, अपने आगे की मैनिफेस्टो बताएगी और उसके बारे में वो बात करेगी। It's your responsibility to have a critical analysis of what's being said, verify those things, और उनको देखिए, उनको समझिए। Everyone had their parties का अपना experience, और during that experience उन्होंने जो भी काम किया है आप उसको देखें कि वो काम कितना अच्छा है। आपके नजदीक अगर एजुकेशन है ना, तो एजुकेशन को देखिए, उसको वेरीफाइबल सोर्सेस से मालूम कीजिए कि जो कहा जा रहा है क्या वो दुरुस्त भी है या नहीं है फॉर एनी पार्टी। फॉर इंस्टेंस, अब जिस तरह अभी शहजाद साहब जिक्र कर रहे थे, व्हेन आई वाज मिनिस्टर एजुकेशन, तो फ्रॉम 2013 to 18 आई वाज वेरी मिनिस्टर एजुकेशन। और उस दौर में
मैं अल्लाह का अब अगरचे बहुत सी कमियां रही लेकिन अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो कम है कि पाकिस्तान की तारीख में वो 5 साल स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन एजुकेशन। हमारे उस दौर में पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट की कोशिशों से तमाम सूबों में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तान के लिए कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पाकिस्तान में वो बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए 5 से 16 साल के बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अहमियत है, तो वो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं बड़ी तादाद में। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कमी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन उस वक्त हुई, यानी कि सबसे ज्यादा एनरोलमेंट उस वक्त बढ़ी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस वक्त बेहतर हुई। लेकिन 2018 के बाद अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हुई कि आज ये बात अफसोसनाक भी है, बल्कि उससे बढ़ के इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं इस वक्त पाकिस्तान बदकिस्मती से, शर्मिंदगी से, हमारा शर्म से चुक जाता है कि एज आई स्पीक नाउ दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन तादाद की पाकिस्तान में। ये क्यों हुआ? आप पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जिसने आज 40 लाख बच्चों को अकोमोडेट करना था, वो उसमें तादाद बढ़ने की बजाय कम क्यों हो गई? हर साल तो आबादी बढ़ रही थी, बच्चे बढ़ रहे थे, क्या पॉलिसीज रिवर्सल हुई? आप वेरीफाई कीजिए कि 2013 में हायर एजुकेशन कमीशन के जरिए पूरी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट तकरीबन 34 बिलियन जाती। उस 34 बिलियन को अगले साल बढ़ा के 2014 में 48 बिलियन कर दिया गया, तो 5 या 10% का इजाफा नहीं, तकरीबन 45% का इजाफा। उससे अगले साल बढ़ा के 64 अरब कर दिया गया, उससे अगले साल बढ़ा के 86 अरब कर दिया गया, उससे अगले साल बढ़ा के 100 अरब कर दिया गया, और 5वें साल वो 120 अरब। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा 80 अरब का इजाफा एक दौर में। उससे पहले जो हाईएस्ट इजाफा हुआ तो 20 अरब का हुआ था एक 5 साल का, लेकिन 80 अरब का इजाफा एक दौर में किया गया। और 2018-19 में क्या हुआ? अभी कोविड भी नहीं आया था पाकिस्तान में, फरवरी 2020 में पहला कोविड का पेशेंट रिपोर्ट हुआ। तो 2018-19 में एचईसी की ग्रांट कम करके तकरीबन 60-61 अरब कर दी गई, और अगले 4 साल वो 60 से 65 अरब के दरमियान थी। तो बजाय इसके कि हम इमोशंस के ऊपर फैसले करें, बजाय इसके कि हम देखें कि हमें कौन ज्यादा स्मार्ट लगता है या कौन ज्यादा अच्छा नहीं लगता, हमें देखना चाहिए कि कारकर्दगी, शफाफियत, ईमानदारी और डिलीवरी किसकी ज्यादा है। हॉस्पिटल्स कब बने, ट्रांसपेरेंसी कब हुई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कब बने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे we will have different opinions. I can have my own logic, I can have my own say, my other citizen will have his or her own say. But at the end of the day, in a pluralistic society, we have to coexist. We have to respect each other. So please, हमें चाहे पॉलिटिक्स हो और कभी भी टूल्स बन के मावराए कानून कोई काम करने की किसी भाषा में इजाजत। डेमोक्रेसी के लिए हम मजबूत रहें, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस अपने टाइम पे इंशाल्लाह हो, और उसके बाद हम उसमें अपना डिसीजन जो है सिटीजन्स उसमें फैसला करें कि हमें कौन से लोग चाहिए जो मुल्क को लीड करें और मुल्क को आगे लेकर जाए, और दैट डिसीजन मस्ट बी ऑन मेरिट्स। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये चानन डेवलपमेंट एसोसिएशन, चानन स्टैंड्स फॉर लाइट एंड ब्राइटनेस and they have a resolve to disseminate good practices and can share good practices from around the world. So please keep working for democracy. Please keep working for peace. Women empowerment is very important. मैंने आके एज गवर्नर, क्योंकि गवर्नर चांसलर भी होता है तमाम तालीमी इदारों का, तो एक कंसोर्शियम बनाया है। दिस कंसोर्शियम कंसिस्ट ऑफ वाइस चांसलर्स एंड different faculty members, और ये कंसोर्शियम काम कर रहा है कि women education के ऊपर और women empowerment के ऊपर। अब देखिए इसमें भी अगर आपने linking democracy with the women empowerment, तो आप जरूर देखिए कि किस हुकूमत ने क्या लेजिस्लेशन की है जो women empowerment की बेहतरी की तरफ जाती है।
क्या इकदाम किए हैं जो विमेन एजुकेशन की बेहतरी की तरफ जाते हैं, क्या फंडिंग की है डेवलपमेंट्स की जो विमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट की तरफ जाती है। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की पब्लिक सेक्टर में पहली विमेन यूनिवर्सिटी फातिमा जुन्ना विमेन यूनिवर्सिटी बनी और नवाज शरीफ साहब को एजाज हासिल हुआ तो उन्होंने वो बनाई, उनका ब्रेन फैक्ट। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। आज मुल्क में जितनी भी विमेन यूनिवर्सिटीज हैं, अराउंड 90% ऑफ दोज विमेन यूनिवर्सिटीज वर क्रिएटेड या 80 मोर देन 80% वर क्रिएटेड इन पीएमएल एंड। आज मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, वो बच्चियां मिलती हैं, वो कहती हैं कि हमारी फैमिली वाज नॉट अलाउइंग अस टू गो टू अ कोएड यूनिवर्सिटी, थिंकिंग के द एनवायरनमेंट वाज टू हॉस्टाइल फॉर अ लिटिल गर्ल। वो वालिदैन की नजर में बच्ची जो है आफ्टर ग्रेड 12 में उनका ख्याल था कि इट्स नॉट फिट टू गो इनटू वर्ल्ड और पे वहां पे वो करे। तो उन्होंने जब विमेन यूनिवर्सिटी की ऑप्शन आई तो उन्होंने अपनी बच्चियों को वहां भेजा और आफ्टर 4 years of education और 2 years of education और 6 years of education उन्हीं वालिदैन ने कहा कि बेटे नाउ यू आर मैच्योर, मोर इक्विप्ड विद नॉलेज एंड स्किल्स एंड वी आर कॉन्फिडेंट, आप जाएं अपना काम करें माशरे में या कहीं जॉब करें या कहीं कुछ करें। और इसी तरह एक प्रोग्राम में मैं ये बात कर रहा था तो एक खातून खड़ी हो गई, उनके हस्बैंड भी साथ आए हुए थे और उन खातून को उस प्रोग्राम में विमेन अवार्ड मिल रहा था। शी वाज वन ऑफ द रेसिपीज ऑफ विमेन चैम्बर अवार्ड्स and she was running her successful business. But during my speech, she got up and she said, I am one of those people as well. मेरा पेशावर से ताल्लुक है, मेरी फैमिली मुझे नहीं जाने दे रही थी किसी यूनिवर्सिटी में। जब फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी बनी तो वहां मेरा दाखिला हुआ। आज मैं कामयाब तरीन कारोबारी खातून हूँ और मैं लाहौर में वो अवार्ड लेने आई हुई थी। यहाँ पे शायद वो रहती भी अब मूव हो गई है लाहौर में या इस्लामाबाद में, मुझे ये नहीं पता। तो इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। तो आज फैसलाबाद विमेन यूनिवर्सिटी में जब जाएं, भावलपुर विमेन यूनिवर्सिटी में जब जाएं, मुल्तान की विमेन यूनिवर्सिटी में जब जाएं, तो देयर आर स्टोरीज ऑफ सक्सेस अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड विमेन एजुकेशन, हाउ थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। दिस इज one way. There have been many other initiatives which different governments have taken. सारी गवर्नमेंट्स ने कुछ ना कुछ किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा। तो बजाय इसके कि हम ये ग्रांट करें कि नहीं जी बस कोई कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं किया गया। किसी ने बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने काम करके उसको बेहतर सस्टेनेबल बनाया और चीजें आगे तक चली। वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। डेवलपमेंट का बहुत सा ताल्लुक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ है, एजुकेशन के साथ है और हेल्थ हमारी बुनियादी रिक्वायरमेंट होती है। एनीहाउ, आई विश यू ऑल वेल and let me read out something which I found very pertinent. The significance of our young people in shaping Pakistan's destiny cannot be overstated. In this event, I see the vitality, creativity, and unwavering commitment to positive change that defines our youth, inshallah. So with positive outlook, it will be you who will be at helm of affairs for Pakistan, inshallah, and you will be making a difference. You are the architects of tomorrow, the visionaries who will lead us into the future, and the trailblazers who will shape the destiny of Pakistan, inshallah. Our nation's demographic advantages lie in its substantial adolescent population, a formidable force for development and progress. I wish you all well. Pakistan has wealth to offer. We just have to have the right attitude and skills and knowledge to explore it all. Pakistan has a lot of potential, but at the same time, the world is opening up. Either there are countries which have negative population growth rate, they need more and more young people to come and work there. At the same time, especially after COVID-19, we see that there are a huge number of opportunities available through the internet and through the technology. So embrace yourself. You have to be relevant, have the right attitudes, and you have to be the leaders. And leaders are caring people. Leaders are people with positive attitudes. Leaders are people who give hope. So be the beacons of hope, and sky is the limit. Inshallah, you have a bright future. Wahjoc, thank you, Sidney.
थैंक यू वेरी मच सर कि तो भी जैसे आपने कहा कि नौजवान जो है मुल्क का असासा है और फ्यूचर है उसी तरह से नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल आज भी है और हमें उम्मीद है कि आज का नौजवान जो है चला पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दोस्तों से कि काइंडली अगर वो शील्ड जो है स्टेज पे ले आए जल्दी से बिकॉज द ऑनरेबल गवर्नर हैज अदर मेंबर्स ऑफ कोर्स जो पूरा सुबह बना रहे हैं तो ही हैज टू गो समवेयर तो हम चाहेंगे कि नौजवानों की तरफ से एक छोटा सा कोऑपरेटिव पिटीशन जो है हम सर को प्रेजेंट कर सकें तो मे रिक्वेस्ट ऑनरेबल गेस्ट प्लीज कम फिर अभी गाइड स्टेज पे आ रहे हैं आपका Guys, so there's a request for every one of you. As the minister is leaving, so we want कि थोड़ी सी हसल क्रिएट ना हो सब अपनी जगह पे वैसे ही बैठे रहें और हम अपने सेशन को आगे फॉर्मली स्टार्ट करते हैं because we have our esteemed guest as well who would be sharing her thoughts with us shortly and कैसा लगा is there any remarks anyone would like to share because like ये वो personalities है गवर्नर पंजाब और ये लोग इनको हम टीवी पर देखते हैं या बहुत कम एक्सेस मिलती है सो इस तरह के इवेंट्स हमें एक्सेस प्रोवाइड करते हैं बीइंग अ यूथ कि हम ऐसे लोग जो हमारे कंट्री को लीड कर रहे हैं उनको वी कैन सी देम एंड वी कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम और उनके एक्सपीरियंसेस हमें लाइव देखने को मिलते हैं तो इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस सर की बातों से उनको अगर कोई इंस्पिरेशन मिली हो एनीवन क्या मुझे किसी का हाथ नजर आ रहा है आप लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं Okay, so I don't see anyone's hand. So I would like to invite our esteemed panelist and the guest, Ms. Kristen K. Hawkins, who is the U.S. Consul General. Ma'am, please come on the stage and share your thoughts regarding the youth engagement and meaningful youth participation. Please come on the stage, and I want everyone to please, make a big round of applause for Ms. Kristen K. Hawkins. Thank you. Hey, distinguished guests, youth leaders of Pakistan, Children Development Association team, Assalamu alaikum, and very good morning to all of you. It is an honor for me to be here today to address this dynamic group of hundreds of young Pakistanis from all across the country. And I'd really like to thank the Children Development Association for inviting me to be here today. For more than 75 years, and I know that's a lot longer than just about anyone in this room has been alive, the United States and Pakistan have worked together to develop a relationship that benefits the people of both of our countries. And a big part of that relationship has been focused on empowering youth in Pakistan to reach their full potential, whether through educational programs, vocational training, or supporting opportunities for young people to come together and exchange ideas, just like all of you are here today to do. And education is the foundation of democracy, economic development, stability, and of course, it's a main pillar of our partnership between the United States and Pakistan. Through the U.S. Agency for International Development, USAID, we have provided over 6,000 scholarships for students across Pakistan over the past 2 decades to complete their higher education in partnership with the Higher Education Commission and 30 Pakistani universities. Just last week, I had the opportunity to present scholarship certificates for 40 students in Pakistan whose lives were impacted by last year's devastating flooding across the country. And now they will have the opportunity to finish their studies at universities here in Punjab with financial support from the United States. And this is just one example of our commitment to youth empowerment in Pakistan.
We've provided vocational training and entrepreneurship opportunities for about 10,000 young people in South Punjab. And of course, we have a wide range of exchange programs and educational opportunities that are available to young people like you. So I would encourage people to check out those opportunities that are available on the US Pakistan website for those who might be thinking about going on someday to do a master's degree or a PhD. And want to gain those insights from abroad to bring back and benefit your work in your communities here in Pakistan. The youth gathered here today represent the future of Pakistan, and I'm confident that you all are going to be a driving force for development and progress in this country. You play a vital role in fostering peace, tolerance, and inclusion, and in bringing about positive change in your communities. So as you participate in the various segments of this festival and conference over the next couple of days, I encourage you to think about the role that each of you individually can play. You're here today because you are leaders in your communities and you individually have the opportunity to make a difference and build a brighter future for your community as well as for your broader country. And there are many opportunities for you to do so through community service, through partnership with one another, and other initiatives. So I would just like to congratulate the China Development Association for organizing this event, congratulate all of you for being here and showing your dedication to building a prosperous, strong, democratic, and inclusive future for your country. I look forward to hearing the outcomes of this conference. Thank you so much. हेलो जी अब आपको आवाज आ रही है आपको आ रही है बस जी अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल आ रही है पहले नहीं आ रही थी Thank you so much. Well, Shada, just for your information, we have just started the event. Like Honorable Governor of Punjab, Mr. Legal Imam has inaugurated the event. We also have here the U.S. Consul General, Ms. Hawkins. She's also here with us. और हम भी जो है कुछ देर में जो हमारे इस वक्त जो मिनिस्टर है वहाँ पे आज is also going to join us on stage. अभी हम पहुँचे नहीं हैं, but he'll be here for shortly. So हमारा जो है ये 13th National Peace Festival है. We have around 300 young delegates, and you know a lot of history about because we were very fortunate कि when Shraddha जो है when she was the member of the Young Parliamentarians Forum, तब से जो है China Development Association के साथ हमेशा से champion की तौर पर support की तौर पर available रहती हैं. So with this, may I request you to please now the floor is yours. और मैं request करूँगा हमारे cameraman ने kindly अगर आप जो है वो audience की तरफ कैमरा कर सकें ताकि she can see कि हमारे जो नौजवान है उनसे directly engage कर सकें. और मैं request करना चाहूँगा हमारे management के लोगों से क्योंकि virtual discussion में I understand कि आवाज़ तक आ रही है. Please थोड़ी सी खामोशी आपको चाहिए. Let's hear from her and then we can move forward with the other section of the program. So आपकी तालियों में request करूँगा मैडम शिजाबाद को खास से the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Shahzad, and you're absolutely right that our relationship with Chanan and your administration goes way back to 2013.
and in 2013, it's now been 10 long years since we've been working together. I would like to first of all say salam and a very good afternoon to everyone who's present on stage, Ms. Hawkins, and especially our young people who are present here in the session today. Or I'm not sure what the preferred mode of language is, but since Ms. Hawkins is present, I would like to continue so that she's also a part of this conversation. So first of all, what I would like to say is that I would like to congratulate the team of Chanan for this particular event. And at a time where this is a time where we needed this event, and an event on youth and peace and democracy altogether. This is what is the need of the hour. This is what is required from all of us, from civil society, from young people, from all the organizations who work with youth, from youth-led organizations, and from youth at large. And I think that for all of us to understand the importance of democracy, and for all of us to understand where we are today in Pakistan, it is important to have a very, very brief 30-second historical context. Democratic institutions in Pakistan, I would still say that they are developing. And when I say democratic institutes, I talk about not just the National Assembly of Pakistan, but all other democratic institutes, which include the political parties as well. And it is only the continuation of democracy that can allow us to develop these democratic institutions and to strengthen their foundation in order for them to function as proper democracies internally as well as externally. And for that to happen, I happen to teach politics for about 6 years at LUMS, and it would be a very regular conversation with my students as well. That is Pakistan a democracy? I would always say that Pakistan is a democratizing nation, because for us to be a democracy, we have to have at least 4 to 5 very peaceful democratic exchanges of governments. And when I say exchanges of governments, when I say completion of the government tenure, it means completion of the National Assembly of Pakistan. And on 10th August, as this National Assembly was dissolved and the session concluded, we successfully completed 3 tenures of a democratic 5-year National Assembly. It is, absolutely right that we still have a long way to go, but I think that we are progressing, and we hope that we are able to continue this tradition of democracy in the coming years as well, where not just the National Assemblies or the Senate, but also the Prime Ministers will eventually start to complete their tenures. Having said that, it is absolutely pertinent that all of you who are sitting here play a very positive role in Pakistan's politics, not just, in terms of political activism, in terms of social activism, in terms of encouraging other people to join. The fact that you're sitting here today means that you are privileged to a certain extent to have had that kind of education, to be able to have that kind of enlightenment, to be a part of a social organization, to be a part of a youth organization. In 2017, when UNDP did a report on National Development Index for young people, the numbers were really concerning. Less than 10% of our young people would be participating in what was any community service, in what was any social network, in what was any political party. So our social interaction with time, and it is also a consequence of a lot of factors, including the global factor where technology has really, taken over, and our modes of participation have also
changed to some extent, but the social and political participation of young people had been historically low. And also, this was not just a Pakistan specific phenomena. In most of the countries across the world, the youth participation in politics has been generally low. But in Pakistan specifically, we cannot afford that. Why? Because about 70% of our population is young population. About 150 million people in Pakistan in 2017 were under the age of 30. God knows how many we are today with the growth rate that we have. So it is extremely important that our young people begin to ask the questions, begin to participate, and begin to ask the right questions. This brings me to the point that when we talk about politics, when we talk about politicians, when we talk about governments, what do we respond to? What do governments respond to? What do politicians respond to? At the end of every 5 years, or sometimes sooner, politicians or members of the National Assembly especially are the only ones who would have to come back to the public for public support, for public vote. So one thing that they effectively respond to is public pressure. But what kind of, so it really depends on what kind of pressure do you develop? What kind of questions do you ask? What kind of voice do you raise? What are the subjects that concern you? I will give you a very small example. Today, if I use a social media medium, for instance, I use Twitter or use Facebook. If I post something on, let's say, AI, on education, on future of knowledge, on technology, on something, some invention that has been done anywhere across the world or even in Pakistan. I've led a startup innovation award. We've spoken about that on social media. That really does not get that kind of attention, even from our young people, that a random political rant about political parties or some sort of, a discourse around some sort of conflict between politicians or between political parties would get me. I will not get that kind of outreach when I talk about skills training programs, when I talk about future of youth even. So what is it that we are asking for? What is it that we are creating the pressure for? Why is my outreach more when I'm talking about some sort of a petty political conflict as opposed to a very concerning issue, which is very real and impacts our society at large in future, and especially our young people at large. So we have to really think about how we are using these social media platforms, how we're using all of these tools that we have at our hands today. And we have to really use them very responsibly and very effectively so that whoever is in the government, whoever our representatives are able to effectively resolve the real problems that we face today. And this is something that this is a thought that I want you to carry with you today. When you use your social media platforms, starting today, think about what is it that you're propagating. And remember that these social media platforms are AI-led. They have algorithms. Whatever you post, whatever you like, they will just reinforce it to you. They will just repeat it for you. If you're saying, if you're writing, if you're interested in positive things, your timelines will show you what you ask for. And it's exactly the same when we talk about the governments. The governments will show you what you ask for. So while it is also the responsibility of the governments, and I'm not going to absolve the governments or representatives of any responsibility, but because today I'm addressing you people, our young people, our young citizens, that is why I'm talking about this side particularly. So we have to be very careful in terms of what we're talking about. Pakistan itself is a big country. Pakistan itself, we are a very, very large population, and we can talk about the pros and cons of it later. And that's also something that we really need to talk about. We're a big country, we're a resourceful country. I always say that economy is never, something that is irreparable.
I remember 2011-12, we used to have electricity and energy shortage of around 10 to 12 hours a day, and not just domestically, but also for the industry. I remember I was, in 2009, 8, 9, 10, even 11, 12, I was in college. And we used to have more than one terrorist incidents in Pakistan every day. In the middle of Lahore, where you're sitting today, we had terrorist incidents. We had bomb blasts. We had, target killing. But in 4 years, in 5 years, you can look at the statistics that there was 98% reduction in security concerned issues. There was 0 hours of load shedding by the end of 2017. Our growth rate had gone from 3% to 6.1%. We had a network of roads that were connecting all of us across Pakistan with each other, and thereby promoting tourism and doing all of these positive things. The only reason for telling you all of this is that we are not to lose hope. Pakistan is a big country. It's a resourceful country. We only need to put our efforts correctly. And it's a matter of a couple of years that we can be on the right track. Yes, we have to take difficult decisions, no doubt about that. We have to go through this tough time in order to fix ourselves structurally, no doubt about that. But we've done it before, and we can do it again. The only thing which is irreparable is the social damage, is the cultural damage. And that is something that we need to be very sensitive about. That is something that we need to be very careful about. Who is damaging us socially? Why are we as a population, as a nation, degenerating socially? Where did we go wrong is the question that we need to ask ourselves. Most of you sitting here, were not probably very old, जबकि मैं बात कर रही हूँ 2013 की या 14 की, शायद आप लोग 8-9 साल की हों. The young people who are going to vote next year, we have added about, as per Election Commission of Pakistan, we've added about 2.1 million young voters this year as compared to 2018. 2.1 million young people, 21 million. 21 million young people, new young people will be voting this year. 2 crore log bante hain takriban. So these young people who will be voting today were probably 9 years old in 2013. So they haven't seen the process of how we came out of one phase of economic turmoil, of energy crisis, of security crisis. It was a time when no one would come to Pakistan. No one would invest in Pakistan. But in 4 years, we had CPEC, we had Gwadar Port, we had all these motorways, we had a functioning economy, 10% growth in LSM. All of that was happening for us. We have to be very careful. We have to be inclusive. Regardless of who you vote for, you have to get out there and you have to cast your vote. You have to participate in the political process. There's no way around it. There's no quick fix to things. And in all of, for the better of all of us, we have to be very, very careful in our social setup, in how we conduct ourselves, in how we express our differences, whether they're religious, whether they're ethnic, whether they're linguistic, whether they're political. We need to get away from extremism, whether it's political extremism. We cannot convert political differences into personal hatreds. We cannot convert religious differences into personal animosities to the extent to what we've seen lately, let's suppose in Jallianwala. I've been to Jallianwala after the incident that happened. So we have to curtail these things. We cannot turn into an extremist country. We're a very big population. If we go that path, there's no coming back. So all of us who are sitting here, we're privileged, we're educated. And the fact that we're part of this youth organization, gives me hope that all of you have, taken out time. You're taking out time from your education schedules, or if you work, or from your families, and you're sitting here to participate in
a conversation, and that says a lot about the effort that you're making. It's not easy to take out time at this age when one has a lot of fun things to do, when one is very easily distracted, to be sitting here talking about democracy, talking about peace, talking about youth. I would like to commend you all, and I'm really, really happy to see you all sitting here. And I think with this, I will conclude what I'm saying. I'm not going to take too much time. And I would like to once again congratulate the team of Chanan for organizing this event and for continuing to organize this event, especially Shehzad, who's always been a very strong pillar. Young Parliamentarians Forum that Shehzad has mentioned is a cross-party forum in the National Assembly. I've been in the National Assembly for the last 10 years now. I was the youngest member back in 2013, and that is when I met Shehzad. And Young Parliamentarians Forum, we have everyone who's under the age of 40, all members of the National Assembly, all MNAs, all senators who are under the age of 40 are automatically a part of this forum. And the beauty of the forum is that we sit across party lines and we talk about policy, we talk about issues, and that is how we're able to push agenda in the National Assembly, in the Senate, which is important for young people. So these are a few things that I feel that a few structures that our young people, our youth, and all of you should know about. If you have any issue, once the elections are done, once the parliaments are back, you should continuously write to your representatives. You should write to these caucuses. We have a women caucus. You should write to standing committees about any issues that you feel are important. So these are a few things that I wanted to put forth for you. And one key takeaway would be to be very careful when you use your social media, to be very careful what you ask for, and to be very, very responsible when we talk about our social norms, when we talk about our cultural norms, to express your differences very respectfully. And that is when they matter. If you do not do it respectfully, you're just, kind of pushing away the other person, you're repelling the other person, and you're not making a case for yourself. That is all from my end. Thank you very much for hearing me so patiently. Thank you very much, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे आप कह रही हैं कि नौजवान जो है वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है that we have champions like you sitting in the parliament, जो नौजवानों को न सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनकी बातें सुन के उसके ऊपर पॉलिसी एक्शन लेते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर जो कि जहाँ पे एक्शन नेशनल पॉलिसी होती है, वहाँ पे तमाम इश्यूज को, तमाम प्रायोरिटीज को, तमाम सॉल्यूशन को पेश करते हैं। We're very proud to have you as one of our parliamentarians, as one of the representatives, and also as one of the partners and champion in the sector. Thank you very much, Madam Shada. We wish that we would have taken questions from young people. I don't know how much time you have. We would have asked आपसे बात भी कर सकते, but how much time do you have? No, you can take a couple of questions. It's okay. Okay, and it's okay for you as well. If we take the question, maybe people can ask you as well. Perfect. Because मैं नहीं चाहता कि हमारे नौजवान जो हैं वो आए और सुने और फिर कहें कि हमारी कुछ सुनता नहीं है. That's why we started. That's why we started with the grassroots voices in the morning for Wahjoc. This is an opportunity for us as another guest, Mr. Mahavya is on the way. He's going to join us very soon. So मैं चाहता हूँ कि if you have any questions from Ms. Shada or Ms. Kristen Hawkins, please. और अब लास्ट में एक सवाल है, you want to share anything, you want to put your expression, so please आप उनको दीजिएगा बाकी साहब. सही है. I'll come to you as well. I think 3 to 4 comments first together or one after. ताल के बाद दीजिएगा दूसरा. Thank you so much. I'm Sal from Kuwait. Since Pakistan has hosted almost 1.4 million refugees from the past 4 decades, and majority of the population of these refugees are also youths. So what's the youth affairs in the National Assembly? What's their take on, and what are they doing, and what's their planning for their inclusion in the national policy? As majority of them would not be representing back to their country voluntarily. So their inclusion is necessary. So what's their policy for the country? Thank you, sir. Let's take a couple more questions and then we'll try to divide question. उनको दीजिएगा mics. वो आगे आगे तो वहाँ पे इनकी पिक्चर भी आ जाएगी। पिक्चर नहीं चाहिए आपको, माइक दे दीजिए, वहाँ पर उनको कह रहे हैं, उसके बाद आनी चाहिए पिक्चर नहीं चाहिए। पिक्चर मेरी आ रही है, काफी नहीं है यार।
Bilal. मैं क्वेश्चन क्लियर करना चाहूंगा मिस फाइनल जो है जो प्रोग्राम के हवाले से देख ठीक है चलिए तो लास्ट टाइम जब यूथ काउंसिल की तो उसकी एलिजिबिलिटी और उसके हवाले से मेंबरशिप में जो है वो मेरे ख्याल से 35 तक का था या नॉमिनेशन भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था मैं बहुत इंटरेस्टेड था आई एम रिप्रेजेंटिंग ए ग्रुप ऑफ लिविंग विद डिजीज सो उस वक्त एलिजिबिलिटी वो नहीं थी लेकिन अभी जो है 30 की कभी मैं लास्ट दिसंबर में 30 क्रॉस किया तो मुझे वो था कि इसमें तो मैं अपना इसमें मैडम शुरू से गिला नहीं बनता पार्लियामेंट से बनता है कि आप जल्दी पैदा कर दिया आपकी बड़ी इसके ऊपर होगी लेकिन मैं just कह रहा था एक तो उसके होपफुली जो नेशनल यूथ काउंसिल वो अनाउंस हो जाएगी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है साइंस तक पे जो रिप्रेजेंटेशन के हवाले से है कि हम मुख्तलिफ सेगमेंट से लोग देते हैं हेल्थ के हवाले से भी रिलीजियस के हवाले से प्रिंटी लोगों के हवाले से भी लेकिन मेरे ख्याल से मजीद इसको रीच और इंक्लूसिवनेस की तरफ चलता है Perfect. Thank you, Ali. Let's hear from इस साइड दीजिएगा Okay. जल्दी जल्दी से anyone कुछ आप में से इस ऑफिस से सवाल पूछना चाहता है you can also ask if you want to. सवाल इसके कि वीजा कैसे मिलेगा प्लीज वो नहीं मिलने वाला यहाँ अस्सलाम वालेकुम मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है जी यूथ का जो पार्टिसिपेशन है यूथ को काफी मुश्किलात का सामना है खासकर ट्राइबल एरिया में उसमें हम यूथ के मसाइल हैं इसको कैसे कम कर सकते हैं काउंटर कर सकते हैं इसके हवाले से मैं समझता हूँ मजीद जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं वो बलूचिस्तान में अरेंज होने चाहिए क्योंकि इससे केवल बलूचिस्तान में इस चीज का रुझान बहुत हमें कम नजर आता है ठीक है thank you very much two more questions or we'll go to our guest just suggestion. I have no any question. Just I am just sharing the effects of the especially US funded programs. But actually, I am just sharing the effects. I was participating China program in 2012. You know, I came from Chhattisgarh, so just if I can share the effects of it after. Then I know I need some pupils, Then I have some pupils guide me, they have Fulbright program, this fellow. Then I have applied for the emerging data Pakistan programs and I have been to there. Now, up to now, if I can share, I travel more than 32 countries. Currently, I am working with the diplomatic mission. And they're looking to advance global refugees more than 12 countries and being supported by US Department of State. Actually, this credit goes to China from there by participating and I see these opportunities. Why? Because, just sharing here, this is the impact of US funded program, it's on youth especially. It's working. It's not changed my life, it's changed my generation. Thank you very much. Thank you, Ahmed. Any other question? तो खवातीन यहाँ पे बैठी हैं उनको किसी पता नहीं है ऐसा नहीं है कि पहले बार सवाल करेंगे then बात करेंगे. Any question please? जी, Ramna. You want to ask? Oh, okay, please. My question is that you said कि youth को कुछ ना कुछ करना चाहिए. So कुछ तो youth ऐसी है जो they are already working. तकरीबन जितने भी यहाँ पे हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं social welfare or for peace or something like that. But एक ordinary person जो youth का part है उसको कैसा role play करना चाहिए peace empowerment के लिए और inclusion के लिए. So can you please answer? Thank you very much. I just want to add, so I just want to add this comment from Ms. Hawkins. So I just wanted to thank for the US mission Pakistan, and because I went on an exchange program to study journalism and it was funded by the State of Department, and that has really helped me, including the challenge, because it was the first training I have ever had in my life. In the development sector, and after that, I got a chance to, get on the scholarship funded by US State of Department. So that has really changed me as a person and studying the journalism in US for 6 months, and all those experiences has helped me because it has given me the sense of community development. It has given me the sense to give back and to pay back
communities, especially for the girls in underprivileged areas, like I belong to the North Punjab, the Gujranwala area, it is not very privileged. So US programs and the channel programs which has been helping a lot of young people and specifically a lot of young women to give a chance to speak and express and share our feelings here in front of a lot of people. So thank you very much, Kamla. Ma'am Shraddha, if you want to respond, getting this is also pushing, and then access will come to you. Sure. Thank you. Very good questions. So the first question was, sorry, मुझे बहुत clearly नहीं समझ आया, but I think, and correct me if I'm wrong, that what is our plan to include young people in policy making, right? Especially जो diaspora जैसे अफगान refugees हैं, इस तरह की marginalized population है, उनको कैसे include किया जा सकता है? Acha. Okay. So that was our first question. The second was an NYC issue. The third was how can we, support the youth of Balochistan, and how can youth participate? So as far as the policy goes, as far as youth participation goes, I will agree that it is, and it has been a challenge to get young people to come out of their comfort zones and to be able to participate. How do we give them a seat on the table? How do we make them part of the policy? How do we, हम कैसे उनको एक healthy debate का हिस्सा बना सकते हैं? For that, हमने जो इस वक्त थोड़ा सा एक youth outreach का काम शुरू किया. I think one of the most effective tools that I've seen, in the last 16 months when I was heading the youth affairs ministry was the use of social media tools. I think that using them really allowed us to hear diverse opinions, hear those groups who would not be able to be physically present with us on different forums for various reasons, either logistical difficulties or even sometimes when they're not allowed to participate on, or when they're not included in discussions. So this is one platform which gives everyone a voice, and we've genuinely used it in order to hear different voices, diverse voices, in order to hear even opposing voices and to be able to address them. There are a few key, if you talk about policy level, there are a few key initiatives that have been taken in the past. The idea of Young Parliamentarians Forum was also to hear young people. So that was one thing that we as young members of the National Assembly, and by the way, Pakistan is, numbers of Pakistan are really good compared to global figures when it comes to young people in the parliament, and also when it comes to women in the parliament. In 2013, when I joined the National Assembly, 109 members were under the age of 40. And in 2018, I think more than 100 people were under the age of 40. So Pakistan does have a good ratio of, young people representing other young people in the National Assembly and becoming their voice. So that was the idea of Young Parliamentarians Forum was to hear young people, to ensure that there was inclusion of their voices on policy level. Then National Youth Council is something that was mentioned, and I'll also address the issue of age that was taken up right now. As far as the National Youth Council is concerned, it is an effort to again include young people on the national level. My tenure of 16 months was very short, and it was mostly spent in firefighting, but we were able to kick off a lot of initiatives, and this is also a part of my addressing the question of youth participation. For instance, we did this National Innovation Award, and this is also for my young activist from Balochistan who just spoke. So we did all of these initiatives, including the National Innovation Award. So anyone who had a good idea, we gave out an open invitation for these ideas. And then there were boot camps for business development, finance, marketing. And after the boot camp, they pitched their ideas in front of this jury that was independently selected by the Higher Education Commission. And these boot camps, all of these things happened in all of Pakistan physically as well. So Balochistan में भी हमने कोयटा में boot camp करवाया, और मैंने खुद जाके जो है
वो कोयटा विजिट किया, गवादर विजिट किया, प्राइम मिनिस्टर के साथ जाके गवादर विजिट किया, for physically went for the laptop distribution, physically went to kick off our sports. So हमने एक और जो हमारा youth engagement का उनको positive चीजों की तरफ लाने का एक initiative था, that was our youth sports talent hunt. हमने hockey, football और volleyball का करवाया, और अभी squash और badminton का हमारे बाद भी it is continuing because हम उसका budget रख के आए थे. तो उसके लिए भी I went to Balochistan, and you know it is absolutely heartening to see young people of Balochistan doing so well. National Innovation Award के लिए जब मैं गई तो मैंने NIC Balochistan National Incubation Center जब विजिट किया, some of the best innovations जो मुझे याद भी रह गई, जिनको फिर हमने इस्लामाबाद भी बुलाया, came from young people of Balochistan. और यही जो डेवलपमेंट है, यही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही जो हम सीपैक की बात करते हैं, जो हम गवादर पोर्ट की बात करते हैं, या जो हम रिकोडिक, सारी चीजों की जो हम बात करते हैं, उसके अंदर आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड लोकल कम्युनिटीज, और उनकी ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दीज टू बी सक्सेसफुल. एंड वंस दे सक्सेसफुल, देयर इज नो बारिंग डेवलपमेंट ऑफ बलोचिस्तान. और जैसे जैसे इंशाल्लाह बलोचिस्तान में डेवलपमेंट होगी, यूथ पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव भी होगी, और यंग बच्चों को जो है वो अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी. इसी तरह जो स्किल्स डेवलपमेंट का हमने प्रोग्राम किया, 1 लाख बच्चे को पाकिस्तान में ट्रेन किया, और यू नो in order to give them skills, whether they're educated, whether they're not educated. आज की दुनिया स्किल्स की दुनिया है, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने IT स्किल्स, कन्वेंशनल स्किल्स की बात की. अगेन बलोचिस्तान हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोटा. फिर हमने लैपटॉप जब डिस्ट्रीब्यूट किए तो पहले जो है वो 3% कोटा होता था लैपटॉप्स का. इस साल वज़ीर आज़म ने 16% कोटा रखा. तो ऑफ द 100,000 लैपटॉप्स दैट डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले जो 16,000 लैपटॉप थे वो सीधे बलोचिस्तान गए, एंड बाकी वर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन टू रेस्ट ऑफ द कंट्री. डिस्पाइट के पॉपुलेशन की डिफरेंसेस हैं, सारा कुछ है, बट दीज वर सम ऑफ द स्पेशल इनिशिएटिव्स, positive discrimination in favor in order to develop our young people coming from Balochistan, ताकि वो जो है वो उसी तरह से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिस्सा बने जैसे मुल्क का कोई भी और शहरी बनता है. इसी तरह से जहां तक पॉलिसी की बात है, आउटरीच प्रोग्राम्स सब पॉलिटिकल पार्टीज ने भी स्टार्ट किए हैं. आई वुड encourage you to be a part of these civil society organizations that you are already a part of these political parties. उनकी आप, but again I would want to very caution you and want to repeat, okay, please be very careful when you become part of this process. It can be a very slippery slope when we talk about it. Be very responsible, be very organized, be very respectful, and then once you're strong enough that you know that no one can, you know, kind of move you from your cultural roots, from your social roots, and then come in the mainstream politics. ट्रेनिंग्स जो हैं वो मेरे ख्याल से ज्यादा होनी चाहिए. जब मैंने भी नेशनल असेंबली ज्वाइन की थी, टू बी ऑनेस्ट, वन थिंग दैट वाज मिसिंग वाज द मेंटरशिप प्रोग्राम in order to understand the processes. So you need to be, you know, you need to read, you need to be educated, you need to educate yourself beyond your curriculum, because unfortunately our curriculums do not teach us about our political structures. They don't teach us about our constitution or democracy per se. तो ये कुछ चीजें हैं. NYC के जो हमारे मेंबर हैं, असल में जो यूथ की डेफिनेशन है पाकिस्तान के अंदर, दैट्स 15 to 29. इट्स एक्चुअली एन इंटरनेशनल डेफिनेशन ऑफ यूथ, जिसके तहत नेशनल जो अपना प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम है वो भी जो है वो फंक्शन करता है. सो इट वाज काइंड ऑफ ए पॉलिसी थिंग दैट वी हैड टू ब्रिंग इट डाउन टू लेस देन 30. मगर और दूसरी बात ये है कि पॉपुलेशन बढ़ भी इतनी गई है कि पिछले 5 सालों में जितने बच्चे 35 साल से नीचे थे, आज शायद 30 साल से नीचे उससे भी ज्यादा हैं. तो इन ऑर्डर टू गिव यू नो अपॉर्चुनिटी टू यंगर पीपल, और मुझे ये लगता है कि हर 2 साल बाद टेक्नोलॉजी और चीजें इतनी बदल जाती हैं कि मुझे तो अपने से 5 साल छोटे बच्चे एक फर्क जनरेशन नजर आती है, टू बी ऑनेस्ट. सो and if they move it up to 35, I think I can also be a part of it, so it'll be in my favor as well. But वो एक policy issue था जिसकी वजह से हमने उसको 30 से कम किया. But let's hope that as soon as the new government is formed, we will have a new youth council. And I think Nabila यहाँ पे मेरे से पहले मैंने देखा था कि maybe she was speaking. She's been a very active member. She was here with me in Commonwealth as well. So be part of these groups, actively participate, and we hope that we will hear stronger voices, better voices, younger voices as we move on, inshallah.
Thank you very much, Karan. बहुत शुक्रिया. Sofin, if you like to respond, maybe you can come here and respond. Okay, so a few of the questions were in Urdu, so I couldn't get the full thing, but I was impressed with the questions that I heard. You know, talking about things like how to be inclusive of refugees. You know, that's the sort of important discussion to have at this sort of forum, and it's certainly an area where the United States and Pakistan have been partnering closely together, with the United States providing assistance to Pakistani communities that are hosting refugee communities, so that both refugees and the host communities in Pakistan can receive the health, education, and other sorts of basic services that are needed, because of course, refugees, like everybody else, have their human rights and deserve respect and inclusion. Also glad to hear people talking about how to be inclusive of people from all across Pakistan and opportunities such as Pakistan and elsewhere. And certainly in the programs that the United States is doing with Pakistan, we are looking for diverse representation and participation in the opportunities that we have. I was glad to hear a couple of attendees here today speak about their positive experience on US exchanges. So if you didn't believe it when I said it earlier, you can take it from them, right? These sorts of exchange opportunities, having that international experience, sharing your own perspectives with others, and also learning new ideas to bring back, perhaps learning new concepts and volunteer with them and getting involved in your community, really making a difference on the issues that matter to you. Those are the sorts of experiences you can have by participating in an international exchange program. So do take a serious look at the opportunities that are out there. If we have any undergraduate students who are here today, it's the time of year to apply for the Global UGrad program, where people can spend a semester of their undergraduate studies abroad. But there are a wide range of other programs throughout the year that are advertised, open to people to apply for, regardless of where they come from in Pakistan, what their background is. So those could be really great opportunities to help take your aspirations to build your communities to the next level. Thank you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया वंशिका. I know कि you received a बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much, and I hope कि हमें आपकी guidance support in the future भी मिलती रहेगी. Look forward to work with you. Thank you very much. तो अब जो है वो हमारे जो मौजूद मेहमान बाबरियाज साहब तशरीफ ला रहे थे. I just received a message from him कि सीएम साहब ने जो है उन्हें कोई और ड्यूटी भी फिलहाल लगाई है. So he's just fixing. वो कह रहे हैं कि हम एक दिन के बाद आएंगे, और मैंने कहा कि खाने के टाइम पे बिल्कुल ना आए, क्योंकि नौजवानों ने खाना खाना है. तो maybe he'll be coming. See the possibility कि शायद वो कल तशरीफ ला सकें. With this, I just want to thank honorable guest, Ms. Kristen Hawking, the US Consul General, and also the other honorable guests who are here. हम चाहते हैं कि एक छोटा सा presentation है, शील्ड है, कि kindly making the लोग kindly वो present कर सकें. जल्द से ले आइए शील्ड. और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे वॉलंटियर्स से सारे नेशनल की सर्च करके, और हमारी मैनेजमेंट की टीम है, स्टाफ में kindly स्टेज पे आ सकें, ताकि we can take a group photo. जल्दी से अगर kindly आप लोग सब आ जाएं, so that we can take a group photo. We thank Her Excellency the US Consul General, and then we'll move forward. हम थोड़ा सा खाना जो है जल्दी कर लेते हैं. निशान, if you can take over from here. ये शील्ड देने के बाद kindly वहाँ पे 10 मिनट होंगे. मैम आप सोफे पे बैठ जाएं. मैम नीचे आना पड़ेगा. चलिए बैठिए. ये मोबाइल पे. Please, thank you. Kindly to volunteer सब लोग आगे स्टेज पे आ रहे हैं. से वैसा सब वेट करेंगे. वेट करेंगे. मेरे आपका सर भैया कहीं आपका खाना किसको खाना है? अरे यार तुम भी संडे भाई थोड़ा कैमरा नीचे कीजिएगा फोटोग्राफर. होते हैं थोड़ा सा हो गया भाई सबका. बोल दे देंगे.
Look at this camera. Nishan, if you can please take over. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे कुछ दोस्तों से कुछ मैं निशान if you can please take over and अभी खाने में हमारे पास गेस्ट हैं निशान and Zara if you can please have some conversation around क्या भी जो next session करना है वो gender equality cover करना है अभी तक एक और दाखिल क्या है if you can please take care of this निशान रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे कुछ दोस्तों से अगर कोई नाम सुने तो पार्टी जो स्टेज के बाद में बता दें Namud if you are here Namud is up Namud, if you can come here, please. Namud, Anamigal, Saita, Imtiaz, Zara is busy. Zara, you can help. Dishan, Dishan, am I doing it? Dishan? Where's Dishan? Zara, if you can please take care. Okay? Ramna, Dr. Aisha? Yes, sir. आजे सारिम है यहाँ पे सारम लव कुमार स्वराज अनिका